नमस्कार वेलकम टू श्रीकाया एकेडमी। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ी थी क्लास 7 रो साइंस रो सब्जेक्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सेटा होचे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 साइंस NCERT बुक। सो आमे सेथिरे लास्ट क्लास रे काहे कि प्लांट्स माने को ऑटोट्रोप्स को जाय एवं एनिमल्स माने को हेटेरोट्रोप्स को जाय से विषय रे पढ़ी थिले। फोटोसिंथेसिस विषय रे पढ़ी थिले काहे कि सेटा को फोटोसिंथेसिस को जाय बिकॉज़ सनलाइट प्लांट्स मानकर खाद्य को सिंथेसाइज करने पर यूज करा जाए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। से विषय में पढ़ी थिले। लास्ट क्लास रे आमे सेल्स मानकर डिवीजन सेल्स भितर के तीनटा पार्ट थाए लाइक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन से विषय में पढ़ी थिले। देन आमे पढ़ी थिले स्टोमाटा जाकि प्लांट्स रो लीव्स रे थिबा गार्ड सेल्स से विषय में पढ़ी थिले। काहे कि ओनली लीव्स ऑफ द प्लांट्स खाद्य तैयारी करि पारंती प्लांट्स पाई एंड अन्य पार्ट्स खाद्य तैयारी करि पारंती नै से विषय रे पढ़िथिले। देन आमे माने पढ़िथिले कि डेजर्ट्स रो थिबा प्लांट्स माने जोठी सनलाइट त प्रबल थाए बट रेन आउ वाटर रिसोर्सेस मिनरल्स वगैरह रो एते अवेलेबिलिटी न थाए तो से जगह रे केमिति ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस माने से गछ मानकर खाइबा तैयारी करंती। सो टुडे आमे तार नेक्स्ट पार्ट विषय पढ़िबा से चैप्टर नेक्स्ट पार्ट्स पढ़िबा। So in the absence of photosynthesis we cannot imagine life because human beings and all the living organisms depend upon the plants and other animals for their survival. So photosynthesis is a very important process for our living in this world. So in the absence of the photosynthesis life would be impossible on this earth. So इटी चित्र रे देइछि किपरि प्लांट्स निजर खाइबा तैयारी करंती लाइक सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड minerals from the soil, water from the soil through their roots through the branches to the leaves. Then chlorophyll in the leaves, that is the green pigment of the leaf, जोटा कि helpful way for the food production in the plants and so that they can alive and we can consume them as our food. So diagram showing a photosynthesis. A diagram टी important diagram जोटा कि photosynthesis रा representation करूछ। So during photosynthesis chlorophyll of the leaves containing the cells of the leaves in the presence of the sunlight and using carbon dioxide and water synthesize carbohydrates. So the process can be represented by an equation. So equation ti kono carbon dioxide plus water using sunlight and in chlorophyll produce carbohydrate and oxygen. So सेमाने कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर को कंज्यूम करती प्लांट्स माने सेटा को सनलाइट और क्लोरोफिल रो प्रेजेंस रे कन्वर्ट कर दियंती कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रे। सो वी ऑल नो दैट प्लांट इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुए सेटा प्लांट अलाइव रहिबा पई यूज हुए एंड एठी लीव्स रो गोटे इंटरनल पार्ट रो डायग्राम देछि जेमती कि गार्ड सेल्स देखैछि स्टोमाटा का कोंथि देखैछि क्लोरोफिल्स देखैछि। सो सेक्शन ऑफ ए लीफ। सो गार्ड सेल्स स्टोमाटा रो देछि चित्र रे रिप्रेजेंटेशन इन दिस डायग्राम and guard cells representation देछि। So during the process oxygen is released and it is consumed by the living beings in this earth. The presence of the starch in the leaves indicates the occurrence of the photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. So carbohydrate produce करंती से माने consume करिकी कोन water minerals and carbohydrate. Carbon dioxide and water or minerals consume करंती from the soil in the presence of the sunlight they produce carbohydrate and oxygen. Oxygen टा consume करंती human beings.
So there are certain plants which have deep red, violet or brown leaves. Now the question arises whether these leaves also carry out photosynthesis. So the answer to this question is that the leaves other than green leaves also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. तान माने होची पत्रे जोटा कि आमे रेड एंड ग्रीन ब्राउन ये सब पत्र कलर देखो जोटा कि ग्रीन है न थाए रेड ब्राउन वगैरह जो जहाँ भी कलर्स थाए और अदर पिगमेंट्स थाए कलर रे से गुड़ाक एक्चुअली ग्रीन क्लोरोफिल को मास्क कर दे थांदे माने ता ऊपर से कलर गुड़ाक रही जाए किंतु से लिप्स माने मध्य फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करती सो दैट ही से प्लांट्स माने अलाइव रहती सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो सो इट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन सो लीव्स ऑफ द वेरियस कलर्स तार एटी पिक्चर एनालिसिस करा जाइए. So we often see green patches in the ponds or stagnant water bodies and these are generally formed by the growth of the organism called as algae. So algae ब्लू ग्रीन algae एमती बहुत प्रकार algae थाए. algae गुड़ाक भी ग्रीन कलर रही था बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल सो दैट दे प्रोड्यूस देयर फूड which gives them green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. So water bodies मानकरे जो green color किछिटा bodies हमको देखा जाए growth देखा जाए organism देखा जाए तो सेगुड़ा को कहा जाए था algae. You can underline this word algae. So they contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. नेक्स्ट आम पढ़ा आम आगे पढ़ले कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कले प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स दरकार पड़े प्लांट्स बॉडीज को अलाइव रही. प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So the carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of the food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. So now the question is from where do the plants obtain nitrogen? So तीनटा जो substance लिखिला carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen. So the carbon dioxide तो आम सराउंडिंग रे से जानीगले ऑक्सीजन टा प्रोड्यूस करे से भी आम जानीगले. तो नाउ द क्वेश्चन इज नाइट्रोजन टा से कोठू पाए. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. सो आमर वायुमंडल रु से नाइट्रोजन कंज्यूम करे. प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. गैसियस फॉर्म रे नाइट्रोजन रही आमर वायुमंडल रे आमर सराउंडिंग रे बट प्लांट्स माने डायरेक्टली गैस फॉर्मेट रे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करि पारंती नाही. जदि से माने एब्जॉर्ब कर जंती कार्बन डाइऑक्साइड बट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करि पारंती नाही. तो soil has the certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form of the nitrogen and release it into the soil. So I mean to कौन जानले कि डायरेक्टली प्लांट्स माने नाइट्रोजन को कंज्यूम करि परिबे ना इन गैसियस फॉर्म. तो से माने को फॉर्म रे टाकू एब्जॉर्ब करंती. सॉइल प्रथमे से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करे. बैक्टीरिया सॉइल रे जो बैक्टीरियाज माने थांती सेटा नाइट्रोजन को एमिति गोटे स्टेट को ट्रांसफॉर्म करते जोटा कि यूजेबल हो पारे फॉर द प्लांट्स. बैक्टीरिया माने ताको कन्वर्ट करके रिलीज कर दियंती इनटू द सॉइल and these are absorbed by the plants along with the water. So plants माने केमती नाइट्रोजन पाती they cannot absorb it directly from the air because it is present in a gaseous form in the air. So
How can they absorb the nitrogen? First of all, the bacteria is present in the soil, convert the nitrogen into a usable form and release it into the soil. And गच्छ माने directly soil रू एगुड़ा को absorb करी नियंती. So these are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen the farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. So आम देखिए कि farmers माने fertilizers बा जो कहती सार सेटा को माटी रे दियंती जोटा कि नाइट्रोजन रिच होता है बिकॉज प्लांट्स मैंने डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं पारती ना. So in this way, plants fulfill the requirement of the nitrogen along with the other constituents. So plants can then synthesize proteins and vitamins. So proteins और vitamins को plants माने एपरी synthesize करथांती. So now I am पढ़िबा other modes of nutrition in plants. So there are some plants which do not have chlorophylls. Now the question ऐसे गला जे plants जो मानकर chlorophylls अछि से माने केमती निजर खाइबा प्रोड्यूस करंती. एबे आमे पढ़िबा जे प्लांट्स जो मानकर क्लोरोफिल्स नाही, आई मीन से मानकर ग्रीन पिगमेंट नाही लीव्स रे, तो से माने केमिति सनलाइट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स को नेकी से मानकर खाइबा तयारी करबे. सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एठु आमे जानि गले बिकॉज क्लोरोफिल टा गोटे इंपोर्टेंट जिंस खाइबा प्रोड्यूस करबा पे फॉर द प्लांट्स. Now the question is the plants which do not have the chlorophyll, how they survive and from where do they derive nutrition. सो एबे तो माने इक्वल टू ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स हो गले जो माने निजर खाइबा निजे तैयारी करि पारंतिनी. ऑल्दो दे माने दे आर प्लांट्स बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल्स. दैट मीन्स दे आर इक्वल्स टू एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स जो माने निजर खाइबा निजे तैयारी करि पारंति नाही. सो लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स. सो दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जोटा कि आमे आगुरु पद्धति पढ़ी सारछि. So the plants which do not have chlorophyll, they take ready-made food from the plant on which they climb. That means गोटे plant आउ गोटे plant ऊपर dependent है for their food. The plant which cannot produce their own food and they do not have the chlorophyll climbs is called as the host plant. माने जो plant ऊपर ये सब प्लांट मैंने जो मैंने निजर खाद्य तैयारी करि पारंती नाही आ जो प्लांट निजर खाद्य तैयारी करि पारे ता ऊपर एमाने डिपेंडेंट थांदी खाइबा पई से मेन प्लांट को कुआ जे होस्ट प्लांट. सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वेरिएबल न्यूट्रिएंट्स. ए चित्र रे जेमते देखा जाउची गोटे गच्छ ऊपर आ गोटे गच्छ लटा भाया माड़ी रही. तो से जो लटा भाया माड़ी रही है से निजर न्यूट्रिएंट्स मेन होस्ट ट्री रु निजर न्यूट्रिएंट नहीं थाए. सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट. सो अंडरलाइन द वर्ड पैरासाइट. सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स को कौन कह जाए? पैरासाइट कह जाए. सो दे आर पैरासाइट्स जो माने निजे खाइबा निजे प्रोड्यूस कर पाने. सो एटा हम टिके आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा. सो जो दी प्रकार प्लांट सेठी रिप्रेजेंट करा गला. गोटे प्लांट जो मानकर क्लोरोफिल थाए आ गोटे प्लांट जो मानकर क्लोरोफिल न थाए. जो मानकर क्लोरोफिल न थाए से माने जो प्लांट रो क्लोरोफिल थाए ता ऊपर गुडे हेकी काइंड ऑफ लता टाइप रो रहिकी होस्ट प्लांट्स से प्लांट मानकठू निजे खाइबा संग्रह करंती. सो दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स. सो गोटे हूँ सेल्फ सफिशिएंट प्लांट जी कि निजे खाइबा निजे तैयारी करि पारे. आ गोटे हूँ डिपेंडेंट प्लांट जो मानक कह जाए पैरासाइट. से माने अन्य ट्री ऊपर डिपेंडेंट रही निजे खाइबा निजे तैयारी करि पारंती नाही. सो ओडिशार सबुठारु भल एजुकेशनल वीडियोस पाई श्रीकाया एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु. प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. एनी डाउट इन दिस चैप्टर्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ईच ऑफ यू. एंड श्रीकाया एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर सीबीएसई आईसीएसई ओडिया मीडियम स्टूडेंट क्लास 1 to class 10
and we provide classes for all the subjects including math, science, English, social science, Hindi, Sanskrit, English and spoken English. आमर एड्रेस हूँ न्यू एज कॉलोनी पोखरीपुट भुवनेश्वर. श्रीकाय एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel for more educational videos. Thank you for watching our videos.